हेलो फ्रेंड्स, मैं और बतूल लास्ट वीकेंड पे बैठ के रिफ्लेक्ट कर रहे थे हमारा जो टाइम था जो हमने दुबई में गुजारा था. इट वाज अमेजिंग टाइम. वी वर देयर फ्रॉम 2011 to 2017, so roughly 6 साल. Amazing time. We still miss it. Such great memories. And again, I can go on and on talking about it. बट फिर हमने ये भी बात करना शुरू की कि वो क्या रीजंस थी जिनकी वजह से हम नॉर्थ अमेरिका, दैट इज कनाडा, जो है वो इमिग्रेट किया. गिवन कि हमको इतना पसंद था, वी वर लाइकिंग इट सो मच, व्हाट वर द रीजंस व्हिच रियली मेड अस मूव टू कनाडा. And when we were reflecting on those things, we thought it would be nice if we can make a video as well on this and share with our followers. बहुत सी चीज़ें probably आप relate कर पाएंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप completely disagree करेंगे या relate नहीं कर पाएंगे, which is fine, but we just wanted to share with you how we got about making the decision, what were the factors which helped us say कि यार this is the right decision, that we should be moving from Dubai and moving to a place which we can call home. तो इसमें number one ये है कि Dubai is never home because there is no permanency. अब सुना है कि वहाँ गोल्डन वीज़ा आ गया है, बट उसकी भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं और उसमें भी इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट लाइक इन्फिनिट. देयर इज स्टिल नंबर ऑफ ईयर्स, उसके बाद आपको फिर री अप्लाई करना पड़ेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. और स्पेशली जिस टाइम पे हमने छोड़ा था उस टाइम पे तो इट वाज वेरी सिंपल. इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब, यू हार्डली हैव अ मंथ और सो, और फिर आपको एग्जिट करना पड़ता है क्योंकि आपका वर्क वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाता है. एंड दैट फीलिंग के मुझे जो है यहाँ मैं परमानेंट नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट होम, दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ आई कैन फील सिक्योर, वो फीलिंग वुड ऑलवेज बी विद अस एंड वी विल ऑलवेज बी वॉचिंग फॉर आवर जॉब्स एंड फॉर आवर करियर एंड ऑल. एंड हेंस वी वांटेड टू इवेंचुअली मूव टू अ प्लेस जिसको हम घर कह सकें. हम बोलेंगे दिस इज़ होम, वी कैन स्टे हियर, वी कैन लिव हियर एंड वी डोंट नीड टू वरी अबाउट losing job or changing jobs, getting fired, laid off. Yeah, something on those lines. So anyways, this was one of the primary reasons for which we moved. Now guys, one call out before we move further in the video. In case you like this video, so like के button जरूर दबाइएगा, as this keeps us motivated to produce similar content. Also press the subscribe button ताकि you get notified as soon as we put new content on this channel. जिस चैनल पे मैं और बतूल भी put content or publish content with regards to settling and lifestyle and living in North America. Our experience is we are from South Asia, from Pakistan, have lived in Dubai, moved to Canada, lived there for 6 years and now moved to US. So we have a lot of experience moving places, settling and all, and we would like to share all this experience that we've had with you. Now let's get rolling back into the video. तुम बताओ. हमारे दोनों बच्चे एक्चुअली दुबई में पैदा हुए हैं और हम एक्चुअली दुबई मूव हुए थे जब वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड एंड इट वाज होम फॉर अस फ्रॉम द गेट गो. एंड एक तरह से आप समझें कि हमारे लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी कि अब नाउ वी आर गोना बी लिविंग इन दुबई. तो एक तो वो एलिमेंट था और दूसरा ये था कि कभी सोचा नहीं था कि दुबई भी छोड़ देंगे ये सब कुछ, ये लग्जरीज, ये जो कुछ वहाँ पे द ब्लिट्स, द ग्लैम, एवरीथिंग. तो वो एक ईजी डिसीजन नहीं था. ये ऐसा नहीं था कि वन फाइन डे वी गॉट अप एंड वी सेड कि हमें कनाडा जाना है या हमने दुबई से निकल जाना है, कहीं और जाके शिफ्ट हो जाना है. तो ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें मल्टीपल हमारे डिस्कशंस हुए हैं और सिर्फ हमारे आपस में नहीं बल्कि और दूसरे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ भी हमारे ये डिस्कशंस हुए, जिसके बाद मैंने और बहरोज़ ने रियलाइज़ किया कि आई थिंक इट वुड बी अ राइट डिसीजन टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन बिकॉज हमने सुना था कि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, कनाडा में स्कूलिंग फ्री है, and it's also a place where you can live forever and not worry about कि आज अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप कैसे अपना even with all the savings it's very expensive to sustain that lifestyle. तो अच्छा, because you were talking about luxury, right? I love luxury. I think Batul would agree as well. मतलब किसको लग्जरी पसंद नहीं होती, कौन पसंद नहीं चाहता. I still miss it. Exactly. कौन नहीं चाहता कि एक ऐसी लाइफ गुजारे जहाँ आपको cheap labor available हो, आपको easy life हो, you can afford maids, tax-free income, and the amount of luxury in terms of security and safety
and that reminds me, बेरोज, आज तक हमने अपना जो है वो डोर कभी लॉक नहीं किया दुबई में. And this habit, which Beros, by the way, is finding really hard to let go here in North America. Not to say that it's not entirely safe, but comparison nahi hai in terms of the safety. Dubai is really good. Like, it's really good. Like, wahan unheard of hai. Right? But luxury का challenge ये था कि, as I said, I would love to go back and enjoy the luxury. But once you start raising a family, things start to differ, or things start to change, because अब सिर्फ आप, for instance, I can control myself कि कहाँ, when I have to say no to luxury, and when I can let myself go and enjoy the luxury. हम जैसे पाकिस्तान से आए हैं, we've seen the poverty, we've seen, and we've experienced life in times जहाँ scarcity थी. But Dubai में it's all about abundance, right? Middle East में it's all about abundance. और ऐसे बच्चे जो उस सिर्फ abundance environment में पैदा हुए हैं, it is very hard for them to know कि when they have to stop or say no. और इसी example है, I remember someone telling me कि their parents were from UK. और उन्होंने कोई second hand गाड़ी खरीदी हुई थी. And the daughter would come back from the school और उसने अपने वालिद से पूछना शुरू कर दी. By the way, that guy was senior to me in my organization, Procter & Gamble. तो वो अपना किस्सा नरेट कर रहा था. तो उसकी बेटी ने उसको कहा कि हम गरीब हैं क्या? तो बाप ने पूछा क्यों? उसने बोला बिकॉज तुमने तो सेकंड हैंड 5 साल पुरानी गाड़ी रखी हुई और मेरे स्कूल में तो है वो रोल्स रॉयस और मस्टैंग्स और मज़राटी एंड ऑल द बिग कार्स एंड ऑल द ब्रांड नेम्स वो सब आते हैं. तो यू कम एंड पिक मी अप इन दिस ओल्ड, बाय द वे उसके पास BMW थी, जस्ट दैट वो BMW वाज 5 years old एंड यू पिक मी अप इन दिस ओल्ड कार. तो हम क्या गरीब हैं? तो उसने मुझे कहा कि दैट इज़ व्हेन आई रियली फेल्ट द शॉक कि दिस इज़ नॉट रियलिटी फॉर किड्स, दिस इज़ नॉट, and this may not be real because eventually उन लोगों ने भी UK वापस जाना था. So raising kids in such luxury is not healthy for them. For their mental health and for them to be raised, to raise children as like overall, all round, individuals जो के जिनको के idea हो के parents ने struggle की है और अगर ये आज मेरे पास चीज़ है, it is because of hard work that my parents have put into. And again, there are outliers, there are always exceptions to the rule, and not to say कि Middle East में ऐसे लोग नहीं हैं, but majority cannot come out of that circle. वो एक vicious cycle है जिसमें आप फंस जाते हैं. अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब हमें ये ज़्यादा हिट किया, जब our child, हमने उसको स्कूल में डाला, प्री स्कूल में, and it was a struggle finding the best preschool because preschool is also a struggle कि जहाँ आप, again, it's a symbol of status कि आप किस preschool में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, because you have to send them to top of the line school so that they can get admission into the top of the line private school eventually. तो again, ये personal choice है. There are people who would not do that, but then it's a vicious cycle, like I said, कि you just kind of get into it. No matter how hard you try to come out of it. फिर जो private schools हैं उनमें हैं ही वहाँ पे private schools, like there are no public schools, so government funded तो कोई schools है नहीं. और private schools में education पे मैं ये बात अभी करना चाहूँगी क्योंकि Beros, another biggest factor for moving to North America was education. And I think a lot of people from Middle East would want to move because जो educational expense है बच्चों का, in terms of that outstanding rating or good rating school में डालने का, वो pressure इतना ज़्यादा है because these are like what, क्या per annum थी fees at the time when we were moving? I think per annum 25,000 60,000 dirhams per quarter, yeah, it was the जो कि हम, I don't want to take the name of the school, but it was one of the top tier schools जिसमें कि हमने अपने बच्चे को we ended up putting her, और वो सिर्फ उस वक्त ही FS1 जो वहाँ कहलाता है, Foundation Stage 1 जो यहाँ का kindergarten है. So it wasn't even like a high grade. अच्छा, इसके बरक्स जो है कनाडा में क्या होता है? कनाडा में पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम जो है वो प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करता है या प्रीडोमिनेंटली यहाँ पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम है. उसमें होता है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ एक नेबरिंग स्कूल में भेजते हैं, जहाँ आप रह रहे होते हैं उसी कैचमेंट में भेजते हैं. बाय द वे, बतूल has made a separate video on explaining the school system in Canada and all, so if you're interested you can check out the video or we'll leave the link here. पर उसमें होता ये कि you don't pick a school basis. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे मुझे जो वो एक अच्छा स्कूल है जहाँ सब अमीर के बच्चे जा रहे हैं, मुझे वहाँ जाना है. आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उसी मोहल्ले के इर्द गिर्द
का जो एक स्कूल है कैचमेंट में, आप उसी में जा रहे हैं। अच्छा, उस मोहल्ले के स्कूल में अमीर से अमीर तरीन का बच्चा आ रहा होता है बिकॉज वहाँ अमीर भी रह रहा होता है, और एट टाइम्स देर आर गरीब कह लें, या वैसे फॉर दैट मैटर यहाँ कोई गरीब है नहीं उस सेंस में, जिस सेंस में हम गरीब को गरीब समझते हैं, बट ऐसे हाई इनकम या लो इनकम लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म के आ रहे होते हैं। सो यू फाइंड मिक्स ऑफ हाई इनकम एंड लो इनकम families and their kids in the same school. तो वो जो चैलेंज आपको दुबई में होता है ना, जहाँ it is all the comparison, all the lush that your child sees in the school, that doesn't exist. उसको फ्लेवर मिलता है अमीर से अमीर तरीन का और गरीब से गरीब तरीन का, which ever it is in the Canadian terms. और अगेन जिस तरह मैंने कहा कि डेल्टा बहुत ह्यूज नहीं है। बाय द वे यहाँ एक और थोड़ा सा ऑफ टॉपिक ये कि कनाडा में अपेरेंटली लाइक देयर आर 4-5 families which are ultra rich, बाकी सब जो हैं वो एक जैसा रहते हैं, और उसकी वजह यह है कि उनका टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। सो आप जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो मेरी लग्जरी में लाइफ की, और मुझसे जो बंदा 2 लेवल सीनियर होगा इन माय कंपनी, 3 लेवल सीनियर होगा इन माय कंपनी, उसकी लेवल ऑफ लग्जरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। हम दोनों गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, हम दोनों जो हैं वो एक अच्छा घर अफोर्ड कर सकते हैं, हम दोनों ऑलमोस्ट एक तरह की लोकेलिटी में रह सकते हैं। So anyways, just went off एक और चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि दिस वुड लुक लाइक डॉन्टिंग ना, कि आपका बच्चा जो है वो उसी स्कूल में जाता है जहाँ पे एक ब्लू कॉलर फैमिली के भी बच्चे आते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड है कि हम प्राइवेट स्कूल मेंटालिटी एंड यू नो वी सॉर्ट ऑफ थिंक लाइक दैट। लेकिन यूड बी शॉक्ड कि यहाँ पे जितनी इक्वालिटी है और जितना ज़्यादा एक बच्चा आपका वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनता है, जहाँ के वो बिल्कुल ऐसे इंटरेक्ट करता है किसी दूसरे बंदे से विदाउट जजिंग हिम, विदाउट पुटिंग ऑल द बायसेस असाइड कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, या ये कौन सी गाड़ी चलाता है, या इसका बाप किस कंपनी में काम करता है। तो अगर आप वो सब चीज़ें छोड़ दें तो आप सोच सकते हैं कि हाउ वैल्यू एडेड योर इंटरेक्शंस आर गोइंग टू बी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि स्कूल में यहाँ पे हमने फील किया कि एवरीबडी इज़ इक्वल। अच्छा, ऑन द सेम लाइंस मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हमने जब हम कनाडा मूव किए थे, आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग वेल, और हम दोनों की इनकम जो है वो एक सस्टेनेबल इनकम हो गई थी, वी स्टार्टेड टू सीक क्लीनर्स वंस अ मंथ, और हमने कहा कि क्लीनर्स आएंगे हु कैन हेल्प अस इन द हाउस। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो क्लीनर की गाड़ी थी व्हेन शी वुड कम टू क्लीन आवर हाउस वाज बेटर देन द कार दैट वी हैड। And it's just because everyone kind of is able to afford the same kind of luxury and lifestyle here, जो कि मैं पहले बात कर रहा था, जो कि it's not possible in Dubai. एक और चैलेंज मैं बताता हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, which is when you would be in Middle East or in Dubai, in Saudi or any other rich Middle East country, आप कभी ऐसा होता है कि आप किसी सिग्नल पे रुकते हैं and you'll see a bus next to you come by, जिसमें वर्कर्स बैठे होते हैं, and usually brown workers, so you can even kind of relate to them. Without any AC, there are just fans on them, और वो गर्मी में मिडल ईस्ट की they are melting. And I remember my child asking कि मतलब ये जो है वो what is so different about them versus us. And I found it very difficult to explain. मतलब मैं क्या बताऊँ कि हम जो है वो एक अच्छे घर में पैदा हो गए by luck, and that's why we are just privileged, और ये लोग जो हैं वो privileged नहीं है। अब that doesn't mean कि यहाँ आपको जो है वो beggar कभी नजर नहीं आएगा, या होमलेस नजर नहीं आएगा। That happens as well, especially अगर आप टोरंटो में कहीं डाउनटाउन वगैरह में जाएंगे। But overall, generally speaking, आपको इतनी बड़ी disparity नजर नहीं आती, जहाँ आप एक AC वाली बड़ी गाड़ी में बैठे हैं और साथ में जो है वो एक बस में एक वर्कर बैठा है जो कि मेल्ट हो रहा है without any AC, and he just looks like he's dying from his face. Now again, good for him that he's still earning well in Middle East versus what he would earn in back home, which is another topic. But कहने का मकसद यहाँ ये है कि that disparity I never had to explain to my child here. And the difference between the haves and have-nots is actually very huge in the Middle East, और वो आपको दिखता है। And for example, यहाँ पर you would see a lot of people जो homeless हैं या they're choosing not to work, तो ये उनकी choice है कि आपको नज़र आएगा गरीब है, गरीब नहीं है, होमलेस है, बिकॉज दैट पर्सन डजंट वांट टू वर्क, बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन उसको क्योंकि आदत हो गई है भीख मांगने की या सड़क पे रहने की। तो ऐसा नहीं है कि देयर वुड बी लाइक काउंटर एग्रीमेंट्स टू व्हाट वी आर सेइंग हियर कि नहीं, हमने तो नॉर्थ अमेरिका में जब ट्रैवल किया तो हमने देखा कि बहुत गुर्बत है, और वी सी पीपल, तो येस, आई मीन यू डू सी पीपल, बट दे आर देयर बाय चॉइस, नॉट बाय डिस्पैरिटी बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस। इनफैक्ट कि अगर आप किसी को यहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर्स को बुलाएं, अगर जैसे कोई प्लम्बर है
वो probably एक salaried individual से ज़्यादा बनाता होगा in terms of because he's a handyman and they charge you by the hour, और वो probably दुबई में भी अब उतना होता जा रहा है कि they kind of charge you by the hour, but then depends, but they're company owned, right? उनके companies के अंदर वो काम कर रहे हैं. यहाँ पर obviously you can have your own business as a freelancer. वो आपको quote करता है और हर बंदा एक different rate quote करता है depending on how good their service is, and they might make more money than you. अच्छा, एक और पॉइंट which I think you would agree with me as well, बतूल के मैं अमूमन लोगों को टीच करता हूँ कि दो तरीके अपने आप को चेंज करने के. एक ये कि you work on yourself and you change your habits, you become a better person. आप वर्कआउट करें, आप अच्छा खाएं, सेव करें all. और दूसरा तरीका ये कि आप अपने environment को चेंज करें. Now the easier way is कि आप अपने environment को चेंज करें versus आप अपने आप को चेंज करें. अपने आप को चेंज करना हमेशा मुश्किल होता है because आपका environment से बहुत impact होता है. So if you want to change yourself, it's best to find that environment. अगर आपने वर्कआउट करना है तो आप कोई जिम ज्वाइन कर लें, कोई ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें. इसी तरह अगर आपने जो है वो अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप कोई ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो कि बिजनेस स्टार्टअप में इन्वॉल्व हैं ताकि वो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो. That is the same trouble I always had in Dubai. And I personally find myself as a weak person as well. I believe, generally speaking, लोग जो हैं वो on human beings on average जो है वो they're weak. And I'm one of them. Which is I just get influenced by the environment a lot. So मेरे लिए ये भी important था कि और मेरे environment से क्या मुराद है? Environment से मुराद is all the luxury, all the getting the biggest car, the best car, the biggest house in the best location and all. And I would be in the same race as well because यही मेरा social circle था. I would be sitting and being amongst those people. और दुबई में ये this is base. Like everyone is just there for the flashiness. और सब फ्लैशीनेस की वजह से हैं तो मुझ जैसा बंदा भी जब उसमें इंक्लूड होता है तो ही गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्लैशीनेस एज वेल. आई रिमेंबर मैंने एक पॉडकास्ट पे भी जिक्र किया था. आई बॉट अ कार व्हिच वाज वेरी एक्सपेंसिव कार, मोर देन आई एवर नीडेड, वांटेड, एनीथिंग. बट वो मैंने सिर्फ इसलिए ले ली बिकॉज आई फाउंड समवन इन माय सोशल सर्कल बाइंग दैट एक्सपेंसिव कार एंड आई वाज लाइक आई कैन अफोर्ड इट. ऑब्वियसली आई कुड अफोर्ड इट बिकॉज आई वाज अर्निंग टैक्स फ्री इनकम एंड ऑल. And I just went and buy the car without realizing that I don't even like cars. मुझे ज़्यादा गाड़ियों का पता भी नहीं है, ना मुझे शौक है. तो शौक होता तो बंदा कहता कि ठीक है यार आपने जो है वो एक एक्सपेंसिव कार ले ली. So that is another factor which is it really the environment influences you. And it's like a rabbit hole. मैं बेरोज को कह रही थी, अक्सर हमारी इस पे बात होती है कि it's an ideology by the way, Middle East में, specifically दुबई में ये इट्स एन आइडियोलॉजी जो आपको सेल करते हैं. एंड लाइक आई सेड इट्स अ रैबिट होल. आप एक चीज़ लेते हैं, एक परचेज लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. आज आपने गुची पहना है, फिर आपको आपने फेरेगामो पहना होगा, फिर आपने लुई विटॉन लेना है. तो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग थिंग. ब्रांड पे बहुत फोकस है, आपके ओवरऑल ब्रांड पे, इमेज पे बहुत फोकस है. लोग सबसे पहले जो है वो ये देखते हैं कि आप किस गाड़ी में आए हैं, कहाँ खाना खाते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका बच्चा किस स्कूल में जाता है. दिस basically defines you as a family, as a person. So this is very big because then you do not look beside or behind this facade. और हर किसी का एक facade है. तो ये एक बहुत बड़ा ट्रबल है वहाँ पर. एंड आई एम अगेन नॉट सेइंग कि वहाँ आउटलायर्स नहीं हैं. आई एम श्योर देयर आर पीपल वाचिंग दिस वीडियो जो कहेंगे कि नहीं, हमने तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े आई मीन दे स्टेड अवे फ्रॉम दिस. एंड वी हैव अ फ्रेंड हु एक्चुअली डिड stay away from all this, and it's a great example like how he tried to keep himself. But again, it's a big pressure because you might be able to control yourself, your spouse, but then what about the kids? Because they're exposed to that environment. They're going out there in the same schools जहाँ वो parties देख रहे हैं, birthday parties इस type की हैं कि जैसे it's a wedding. You wouldn't even spend that kind of money on a wedding. So it's very lavish. Let me add on the birthday parties. अच्छा, इसमें चैलेंज क्या है? आप, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त जिनसे मैं आर्ग्यू करता हूँ वो कहते हैं कि यार मतलब it's all about you, right? So you should become stronger, not get influenced by the environment, and just be a stronger person जो कि इन चीज़ों से influence नहीं होता. Your kid is invited to that birthday party. आपका all year long those lavish birthday parties, क्योंकि आपने एक अच्छे स्कूल में डालना है और वो भी प्रेशर है कि अच्छे स्कूल में डालना है. अच्छे स्कूल में डालेंगे तो वहाँ सारे यही लोग आ रहे हैं जो कि who can afford and who are ready to spend. All year long, he or she is being invited to those birthday parties, and now comes the turn for you to throw the birthday party. तो आप क्या करेंगे अपने बच्चे के लिए? बहुत एक बेसिक सी बर्थडे पार्टी थ्रो करेंगे? No, of course not, right? So because your child will go like, मतलब this is embarrassing now. I have attended all those big parties, everything, and now this is just small party because
you want to set an example for me, that example is out of the window when he or she was being invited to other birthday parties as well. So the point is, that's what I say, and that's how I started, which is I love luxury and I know when to stop, because I've seen the toughness of life as well. I've seen the poverty and all. But for my kids, it was impossible for me to explain to them any different life than luxury. And when to know when it's overindulgence. मतलब when to draw the line, where to draw the line, ये एक बहुत बड़ा question है. It's a big dilemma living there. और again ये मेरी और बहरोज़ की personal story है, तो again it's like a very personal thing. It's not necessary कि people would relate to it. Maybe you have a completely different experience there. But this is generally what we faced. For example, a valet. बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि लग्जरी की, कि चलें वो तो आपको मेड्स और एक्सेस टू लेबर, जो वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है, मेड्स हैं हर एक के पास, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पीपल गेट सो डिपेंडेंट ऑन हाउस हेल्प कि इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू एक्चुअली देन वर्क ऑन देयर ओन. और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका मूव करते हुए हमें बहुत से लोगों ने अप्रोच किया कि ओ माई गॉड, हम वहाँ खुद से कैसे घर साफ़ करेंगे या ख़ुद से खाना कैसे पकाएंगे, हम गाड़ी बाहर जो खड़ी है उसको कैसे साफ़ करेंगे, या बर्फ़ कैसे साफ़ करेंगे. और हमारे घर में तो मेड है जो कि हमारे बच्चों को भी देखती है, बेबी सिटर फिर तो हमें करना पड़ेगा, या बच्चों को कौन देखेगा. तो आई मीन दीज वर सो मेनी क्वेश्चंस वेयर दे डिडंट नो कि अगर वो आएंगे तो वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी हाउस हेल्प पे कि दे कैन नॉट थिंक ऑफ अ लाइफ आउटसाइड ऑफ दैट. और जो कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि आप हाउस हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते, बट दैट हाउस हेल्प इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बिकॉज पीपल लाइक टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन एंड इट्स नॉट समथिंग विच इज़ easily available. So unless you're really rich and in that top tier, जो कि यहाँ again it's not possible. तो that's one thing. Valet का जैसे मैंने mention किया था, तो आप किसी भी मॉल में चले जाएं, मॉल ऑफ एमिरेट्स इज़ वन थिंग, आप उसके एक सर्टन फैशन डोम में आप उसके बाहर से गुजरें तो वो आपको राइट अवे दे पीपल स्टैंडिंग टू टेक योर कार. एंड यू गो टू मदीनत जुमेरा, यू हैव मल्टीपल वैले, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी गाड़ी दें, कोई गाड़ी आपकी पार्क करके आ जाएगा. यहाँ वी डोंट सी दैट अनलेस इट्स लाइक अ कॉन्सर्ट है या कोई ऐसा इवेंट है जहाँ देर इज़ अ रिक्वायरमेंट. You don't have that option, and frankly I don't miss it because I feel that I'm so empowered when I'm doing my stuff myself. I do miss it at times, but yeah. Anyways, guys, I think I do have some few other items as well which we reflected and talked about, but it's becoming a long video. So thanks for watching. In case you like the video, please like button zarur dabayega as it keeps us motivated to produce similar content. Also press the subscribe button so you get notified as soon as we put new content on this channel. इस चैनल पे हम content produce करते हैं with regards to settling in North America. We have experience with regards to settling in Canada. We've lived there for 6 years and now we moved to US, so we have experience with that as well. Coming from Pakistan. दूसरी चीज़ जो हमने काफ़ी फेस की और हमने देखा फेस होते हुए लोगों को, वो थी एक सटल बायस है अगेंस्ट ब्राउन पीपल, जो कि आपको नज़र आएगी इन मिडल ईस्ट. एंड दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन फ्रॉम लाइक टाइम्स इमेमोरियल, यानी कि जो कहते हैं ना बहुत सालों से ये चला आ रहा है. जब से लोग जो हैं वो अबू धाबी, दुबई, सऊदी जा रहे हैं, हमने देखा है हमेशा से कि लोग ये फेस करते हैं द ब्राउन बायस. और वो ये है कि आप जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे तो दे समटाइम्स वुड नॉट गिव यू द सीट बिकॉज दे हैव अ सर्टन कोटा फॉर पासपोर्ट होल्डर्स, सिटीजन्स ऑफ कैनेडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. तो ये यूके इज़ अ बिग चंक जो स्कूल्स में दे टेक अप द सीट्स. तो ये बहुत ज़्यादा एक इशू है कि अगर आप साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं तो आप एक सटल बायस नोट करेंगे इन द मिडल ईस्ट. आई वुडंट कॉल इट सटल ऑल्सो, एट टाइम्स इट्स वेरी ब्लेटेंट कि यू वुड फील कि just because we have a certain skin color, we are treated a certain way. And this is something that cannot be, like I said, it's been coming through generations and generations. जो हमारे बाप दादा भी जाते थे उन्होंने भी फेस किया और अभी भी लोग फेस कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि आप यहाँ नॉर्थ अमेरिका में नहीं फेस करेंगे. आई मीन यू डू सी इट, आई मीन देयर इज रेसिज्म एंड ऑल एवरीवेयर, बट Dubai, because again it's a very small country, you do see a lot
because of South Asians, even though there are lots in number. लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो आपको ट्रीटमेंट मिलता है, इवन विद द एक्सपैट्स, वहाँ पे जो वाइट स्किन एक्सपैट्स हैं या जो आपके अरब्स हैं, वो दे वुड ट्रीट द वाइट पीपल इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे वर्सेस हाउ दे वुड ट्रीट ब्राउन पीपल. तो ये भी एक रीज़न है कि एक ब्राउन पर्सन वुड फील मच मोर वैल्यूड एंड सिक्योर्ड coming to Canada and living in a country like Canada or Australia. Cool. Thank you, Batul. So I think we should just wrap it up now. So thanks for watching the video. I hope you liked it. I hope you liked it. And in case you did, please don't shy away from pressing the like button and also subscribe to the channel. Thank you. Thank you so much.